So we are starting with the Trisaran Panchasil. Namo Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Abhinayana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Kamesu Miccachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Suraya Miraya Madhya Pramadasana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Sabba Papasya Akaranam Kusalasya Upasampada Satita Paryodapanam Etan Bhutana Sasana Sadhu Sadhu Sadhu. Thank you. Again, thank you very much for joining today. We have around today Nandakishore Chandan was planning to talk on the stall and he's not yet reached here. He's trying to connect his internet, but we have Archana Vaidya on the call. So I would like to request Archana, if you are there, we can continue with your talk. Today, sorry, the Bhante is not here. So we start with the Buddha Vandana, but as Bhante is not here, so we'll continue with your talk. And later on, we can go with the Nandakishore Chandan. So Archana ji, are you there? Yes, sir. ओके आप अभी अर्चना जी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जब टॉक कर रहे हैं तब वीडियो दिखेगा तो अच्छा रहेगा. तो वी कैन सी यू एंड इफ इज नॉट देयर दैट इज ओके टू, बट लेट मी या वी कैन सी यू. Okay. थैंक यू. या जस्ट अ सेकंड. अभी दूसरा Just a second, I would like to introduce you to the group and we can go from there. So
So here with us, this is Archana Vaidya. She is joining from Mumbai, and she is with the Kranti Jyoti Women's Trust from Pune. Kranti Jyoti aims at women's leadership development to ensure women's participation in decision-making process, both at public and private sector. Kranti Jyoti is a non-profit organization strives to empower women to transform socio-economic, education, and cultural conditions. They are doing a lot of activity in the ground level, and the Kranti Jyoti's major activity is entrepreneurship development and the leadership development among women. So here with us Archana ji on the call, and she is going to talk in Hindi and English in between, and give us a presentation what they do in the Maharashtra area, another part of the country. So Archana ji, go ahead. The call is recording today. So if you want to present, let me know. Then I can share the desktop and you can present from your side. And again, thank you for joining today. Now go ahead. मैं प्रेजेंट में करूँ बात रखने की कोशिश करती हूँ. ओके, आप थोड़ा माइक के पास आइए तो अच्छा रहेगा. थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रहा, नहीं तो आप हेडसेट पहन लीजिए तो अच्छा रहेगा. अभी आवाज क्लियर आएगा. अभी आवाज आ रही है? या अभी आवाज आ रही है. या मैं हिंदी में बात रखने की कोशिश करती हूँ. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. हिंदी में हाँ, इंग्लिश थोड़ा पसंद आएगा, मतलब पूरी तरह से नहीं रख पाएंगे, इसलिए हिंदी में. कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं शुरू कर सकती हूँ? या शुरू कीजिए. सर्वप्रथम मैं अपने आदर्श को तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सबको अभिवादन करती हूँ. और घंटी जी यहाँ पर नहीं है, अगर वो भी होते तो मुझे बड़ी खुशी होती कि मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन विहारा पर बहुत दिनों से सुना था, लेकिन मतलब मैं खुद हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी कि मैं ज्वाइन करूँ, और बहुत सारी चीज़ें थी इसके. तो अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के आप सभी साथियों को मेरी तरफ से विनम्र जय हिंद. और थैंक यू वेरी मच कि मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका मिला. यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं जुड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, लेकिन आप यहाँ पर जो अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सभी साथी है, जो इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दूर दूर में बसे अपने साथियों को एक साथ इकट्ठा लाकर उनमें विचार मंथन कर रहे हैं. तो ये बात सही मायने में बहुत, मतलब उसकी तारीफ करनी चाहिए. उसको मुझे बहुत अच्छा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से आप कर रहे हो. तो आप सबको मैं दिल से बधाई देना चाहती हूँ. यहाँ पर आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात रखूँ, क्रांति ज्योति के माध्यम से जो काम कर रहा है उसका मैं आपके सामने रखूँ. इसके लिए सबसे पहले मैं आपकी आभारी हूँ. और लाइव से अगर चली जाए तो प्लीज इसको मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए पहले ही सारी गतिविधि. मैं खुद का परिचय यहाँ पर जैसे आपने कहा, मैं अपना खुद का परिचय अपने शब्दों में करना चाहूँगी. मेरा नाम अर्चना वैद्य, मिस अर्चना वैद्य है ना, मिसेस बनसोड़े हूँ. मिस अर्चना वैद्य, अर्चना गौरव वैद्य. मैं बहुत ही सामान्य और सर्वसाधारण, मतलब गरीब परिवार में पली बड़ी, वहीं पर जन्मी, और अमरावती से बिलोंग करती हूँ. जैसे कि बहुजन समाज की स्थिति जो है, बस्ती में बसने वाले लोगों की जो है, वो अनेक समस्याओं से ग्रस्त है. इसी तरह से मेरी जो बस्ती रही वो भी इन सब समस्याओं से झुलसती रही है. ऐसी बस्ती में पढ़ते हुए मैंने मेरा मास्टर इन सोशल वर्क किया है, और जैसे नागपुर यूनिवर्सिटी से किया. इससे पहले मेरा ग्रेजुएशन जो है वो अमरावती से हुआ है.
2010 में मतलब मेरा 2003 में मेरा मास्टर हुआ। उसके बाद मैं अलग अलग जगह काम कर रही थी। 2010 में मिस्टर प्रदीप बंसोड़े के साथ मेरी शादी हुई थी और उसके बाद मैं पुणे में आकर बची। मतलब 2010 से देखा जाए तो आज 3.5 साल हुए हैं मैं पुणे में हूँ। यहाँ पर अभी तक जो हमारा काम चल रहा है उसको यहाँ पर रखने की कोशिश करती हूँ। मेरे पति जो है वामसिक के एक्टिविस्ट है और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप पर काम करते हैं। उनका बहुत सारा समय जो है तो दिल्ली में वो कुछ साल तक मतलब 5-6 साल वो फुल टाइमर भी थे। तो इसकी वजह से मुझे उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और सही मायने में आज की डेट में देखा जाए तो मैं जो भी कुछ करता हूँ तो वो सब क्रेडिट उनको जाता है। क्योंकि अगर मतलब जीवन साथी के साथ ना हो तो इसलिए इस तरह से सामाजिक काम करते हुए तो शायद एक महिला हम होते महिला होने के तौर पर मैं नहीं कर सकती। मैं ये भी नहीं बोल सकती कि अगर शायद अगर कहीं और होती तो मैं ये सब काम कर पाती या नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं अपने परिवार से और मेरी जो लाइफ पार्टनर है उनकी वजह से आज सामाजिक जीवन में ठीक से काम कर पा रही जो मुझे लगता है। बाबा साहब और जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले उनके विचारों को उनके संदेशों को पढ़ने के बाद जो समझ में आया मतलब जब बचपन में थी तब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं जिस बस्ती में बसी हूँ जिस बस्ती में मैं रह रही हूँ कि वो उसको सामाजिक समस्या कहते हैं या फिर उसके अलावा भी कुछ जिंदगी होती है। मेरे लिए वो केवल हाँ यही जिंदगी होती है इस तरह से था। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई और बाबा साहब और फुले साहब के विचारों को पढ़ा उनको समझा तो उनकी संदेशों को जानने के बाद समझ में आया कि सामाजिक समस्या किससे कहते हैं और जो मेरी बस्ती थी वो इस तरह से सामाजिक समस्या से ग्रस्त थी। ये उन विचारों को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज किया। एक स्त्री होने के नाते जो मेरी समझ है मेरी जो क्षमता है उसके अनुसार मैं क्या कर सकती हूँ इस सवाल पर जब मैं सोच रही थी तो उस वक्त मतलब मेरे पास उस वक्त कोई खास मतलब ठोस जवाब जिससे बोल सकते वो नहीं था। लेकिन जैसे धीरे धीरे मैंने कहा कि सामाजिक समस्याएं क्या है वो मुझे पता चली कि क्यों हमारी समस्या हमारी बस्ती इस तरह से समस्याओं से ग्रस्त है। हमारी यहाँ पर जब मैं कह रही हूँ तो यहाँ पर पूरे भारत में बसे बहुजन समाज की जो बस्तियाँ है जो जिसको स्लम बोल सकते हैं कोई बस्ती बोलते हैं या फिर हो सकता है छोटा सा नगर काइंड ऑफ हो। लेकिन फिर भी वो जहाँ पर अपने लोग ज्यादा बसे वहाँ पर समस्या ज्यादा होती है इसलिए मैं उसको अपनी बस्ती के तौर पर देखती। तो उनके विचारों को बाबा साहब के अपने महामानव से मतलब उनके विचार महानायकों के विचारों को जानने के बाद लगा कि नहीं ये समस्या है और इसको बदला जा सकता है। तो उसको लेकर ये कर रहा है यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। मैंने जब काम करने का निश्चित किया तो जैसा कि मैंने जैसे पहले कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ एक स्त्री होने के नाते मैं अपने समाज के प्रति मेरी जो मतलब मेरा जो कर्तव्य है कि मैंने जो करना चाहिए उसके प्रति मैं क्या कर सकती हूँ इसको सोचा। तो ग्रास रूट पर और स्पेशली महिलाओं के साथ जमीनी स्तर पर बस्ती या फिर रणनीति को ग्रास रूट बोलते वहाँ पर ज़्यादा कार्य करना मुझे अच्छा लगा और वहीं पर मुझे लगा कि मैंने करना चाहिए। महिलाओं की मतलब बहुत सारी बातें जो है काम तो मैंने कहा कि मैं 2003 में पास आउट हुई। उसके बाद मैं काम कर रही थी तब लगभग 7-8 साल मैं अलग अलग एनजीओ में काम कर रही थी। लेकिन काम जो कर रही थी वो उनके प्रोजेक्ट लेवल पर था। लेकिन मैं अपने समाज के प्रति मेरा जो दायित्व है उसके तौर पर मैं क्या कर सकती हूँ। हमने एक ऐसा मॉडल बनाने की यहाँ पर कोशिश चल रही है जिससे आंदोलन से अनुकूल महिलाओं के निश्चित परिणाम आए। जैसे कि हम मतलब हमारे महानायकों ने हमेशा से कहा है कि महिलाएं अगर आगे आती है तो समाज की तरक्की ज्यादा होगी। जैसे कि बाबा साहब ने कहा है कि अगर किसी समाज का मतलब मैं अगर किसी देश की समाज की तरक्की मतलब गिनता हूँ देश करता हूँ तो वो महिलाओं की तरक्की के ऊपर है। और ये सही मायने में आज की डेट में देखा जाए तो
भले ही महिलाएं दिखे कि मीडिया हमें बताता है कि महिलाएं जो है चांद पर गई है या पायलट बन गई, कलेक्टर बन गई, लेकिन वो गिने वर्ष से गिने गई है। तो बहुत समाज की जो महिलाएं हैं वो आज भी मतलब जो हजारों सालों की जिंदगी जी रहे उसमें आज भी ज्यादा कुछ बदल हुआ ऐसे नहीं है। इसमें से मतलब हमारे महानायकों के जो उनका जीवन कार्य रहा उनके जिसमें कुछ लोगों में बदलाव आया है। बहुत मतलब हम जैसे मैं बदल गई हूँ, लेकिन मैं जिस बस्ती से आई हूँ वहाँ से मुझे याद नहीं है कि मेरे क्लास में जो थी वो अभी कहाँ पर है। शायद उनमें से बहुत सारी महिलाएं जो है वो आज भी अपने अपने जो मतलब जीवन में एडजस्टमेंट के साथ जी रही या फिर ऐसे बोल सकते एडजस्टमेंट को इस तरह से नहीं। लेकिन मेरी उम्र की जो भी महिलाएं हैं वो आज 3-4 बच्चे की माँ है, कई झाड़ू बर्तन पोछा करके कमा रही है। लेकिन जिस बस्ती से मैं आई हूँ वहाँ से वो आगे निकल कर नहीं आई, उसी में उनका जो जीवन चक्र है वही तक चल रहा है। तो क्रांति जैसी के माध्यम से मतलब यहाँ पर एक मॉडल बनाने की कोशिश चल रही है, जिसको धीरे धीरे आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, रखने की कोशिश करती हूँ अपने साथ कि ये जो है मतलब आप सभी हम सब यहाँ पर आप जैसे बुद्धि है जैसे आप जानते हैं कि इस तरह से कार्य करने में बहुत सारी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, जैसे इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, मटेरियलिस्टिक है और फाइनेंशियल है। और इन चारों के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कार्य हो सकता है, मतलब पॉसिबल उसको नहीं है। मुझे नहीं लगता क्रांति की जो पिछले मतलब 2 वर्ष मतलब मैं यहाँ पर 3.5 साल से, लेकिन 2 वर्ष से जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए मैं जो रिजल्ट है या फिर जो काम है उसको बताती हूँ। हमने 2 कामों के जो क्षेत्र चुने हैं, जो एरियाज हमने वो काम किए वो 2 पार्ट में फोकस करते हैं। इसमें से महिलाओं में नेतृत्व विकास करना है। यहाँ पर जब नेतृत्व की बात आती है तो हम देखते हैं कि अगर वो पॉलिटिकल लीडर है तो उसको एक लीडर के तौर पर या नेता के तौर पर देखा जाता है। लेकिन क्रांति के तहत हम जो है महिलाओं में ऐसी धमक, ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति या फिर इस तरह से क्षमता का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत ना वो केवल स्वयं की बल्कि अपने परिवार की, अपनी बस्ती की और अपने समुदाय की समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आएंगी। अपना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये समझकर वो खुद जिम्मेवारी लेंगे इसकी। इसके लिए हम महिलाओं के लिए क्रांति के तहत एक कम्युनिटी लेवल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें संविधान के जो अलग अलग प्रावधानों के साथ अपने महापुरुषों के संदेश को भी हमने टेस्ट रूप में लाया है। एक ट्रेनिंग और एक्चुअल एक्शन प्रोग्राम पर आधारित प्रोग्राम है। इसमें जब हम संविधान या फिर महापुरुषों के संदेश की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि भारत में आज भी जाति व्यवस्था जिस तरह से है, हर किसी को लगता है नहीं ये मेरी अलग समस्या है, ये फिर इसमें अगर हम उनको रियलाइज करके दे कि जाति की वजह से भले ही आपकी जाति XYZ कोई भी हो, आपकी और इनकी समस्या जो कि बैकवर्ड ऑफिस क्लासेस से बिलोंग करते हैं इनकी समस्या एक ही है, तो महिला इसका ड्यूटी है। और इसी को लेकर मतलब मेरे कुछ अनुभव यहाँ पर अगर मैं रखने की कोशिश करती हूँ कि जो महिला है जिनको अपने महापुरुषों के बारे में आपके बाबा साहब हो जो खुले हो सावित्री माई इनके बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसी महिलाएं यहाँ पर आने के बाद अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है, यहाँ पर आने के बाद पहले वो दिन उनको लगता है कि अरे ये तो यहाँ पर बाबा साहब की फोटो है इनके ऑफिस में, ये तो मतलब हो सकता है अम्बेडकर एक लोग है, हमें हमें इनसे मतलब हमने कुछ नहीं इनसे फायदा होगा, फिर हम यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा कास्ट मेंटेलिटी जो है इसकी वजह से। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो आती है यहाँ पर ये कम्युनिटी लेवल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो पिछले कुछ
रिजल्ट जो जैसे रिजल्ट जैसे कुछ महिलाओं से मिले तो उनको लगता है कर लेना चाहिए, फिर वो आती है। ये 45 डेज का रहता है और यहाँ पर आने के बाद वो धीरे धीरे हम यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि संविधान के प्रावधानों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरह से बनती है, महिलाओं की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो ऐसी कुछ चीजों को लेकर तो फिर धीरे धीरे हम बात करते हैं कि जब कानून कैसे बने, तो कानून बनने के पीछे क्या मतलब कारण रहा या फिर कैसी परिस्थिति थी जिसकी वजह से हमें कारण वो सब कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई। तो बाबा साहब के विचारों को रखते हुए फिर हिंदू कोड बिल जैसे आप सब अवगत हो उससे, हिंदू कोड बिल की बात रखते हैं। बाबा साहब ने फिर महिलाओं के लिए मतलब न केवल विशिष्ट जाति के बल्कि बहुजन बल पूरे भारत की महिलाओं की बात रखी है। तो वो सब पता चलने के बाद वो धीरे धीरे बाबा साहब को पढ़ना शुरू कर देती है कि हाँ भाई ये तो फिर पढ़ाई का हिस्सा बन जाता है। तो वो बात रखती है कि किस तरह से करना है। तो उसके बाद जो रिजल्ट है तो महिलाएं जो पहले बाबा साहब का नाम लेना उनको मतलब गवारा नहीं था इस तरह से बोलते, आज वो महिलाएं खुद बाबा साहब के बारे में पढ़ती है, खुद औरों को पता कि दूसरी औरतों को कि देखो नहीं बाबा साहब ने ये चाहा है तो हमें भी बदलना चाहिए। जब हम बहुत बात है अभी जो मैंने पहले डिस्कशन कर रहा था कि क्या बाबा साहब का एक कोटेशन जो महिलाओं के साथ उन्होंने बात करते हुए रखा था कि बाबा साहब ने महिलाओं को कहा कि क्या मतलब उनकी कोख को ही उन्होंने कहा कि कितना देखो अपनी आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आपकी कोख में पलने वाला बच्चा जो है जन्म से पहले ही गुलाम बन के देश में आता है, उसको ना तो किसी सुविधा की मौका मिलता है या फिर ना वो कोई तरक्की कर सकता है। तो जब उन पर बात आती है और उनको मतलब वो बाबा साहब के कोटेशन के साथ मैं बता रही थी तो उन्होंने कहा उनको भी लगा कि हाँ भाई ये तो बात सही है कि ब्राह्मण लेडी है तो उसका बेटा जन्म से पहले ही वो होनहार है, इस तरह से उसको इस देश का नागरिक होने का हक मिल जाता है। लेकिन जो बहुजन समाज की समस्त महिला है उनका बच्चों को इस तरह से स्थान नहीं मिलता। तो आज भी वो स्थिति उनको दिखती है कि देखो अपने बच्चों के लिए किस तरह से स्कूल है, क्या सुविधा है। तो वो ये जो प्रोग्राम है तो उसकी वजह से बहुत सारा रिजल्ट हमें दिख रहा है। दूसरा जो है यहाँ पर कांटिविटी के तहत महिलाओं में उद्योग का विकास कि हम देखते हैं कि बहुत अपनी जो यहाँ की बस्ती की रहने वाली महिला है वो अलग अलग तरह से उनको काम नहीं होने की वजह से या फिर घर में मतलब एजुकेशन या फिर फाइनेंशियल जो स्टेटस है उनका वो बहुत ही निम्न होने की वजह से वो खुद को सक्षम नहीं रख पाती या फिर अपने परिवार के अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकती। तो हम ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है महिलाओं को होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग के तहत उनको अलग अलग ट्रेनिंग दिया जाए और उनके बिजनेस को यहाँ पर हम सपोर्ट करते हैं वो बिजनेस करें। तो इसके लिए हमने लोकल कॉन्ट्रीब्यूशन से रमाई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है जिसके तहत बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आए। उसमें से बहुत सारी महिलाओं ने जो है हाँ उसमें एम ओमान जो अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन ओमान ग्रुप है उन्होंने भी उस वक्त हमें सपोर्ट किया था जब मैंने उनको लिखा तो उनका वजह से तो वो भी बहुत उनके सपोर्ट रहा और उससे हम शुरू किया। तो उसमें से अभी 28 नवंबर को उसको 1 साल हुआ तो हमने रियलाइज किया कि 200 से ज्यादा महिलाएं उसमें जुड़ी जिन्होंने अलग अलग ट्रेनिंग लिया है और उसमें से बहुत सारी महिलाएं खुद का कुछ ना कुछ बिजनेस कर रही है। एक बहुत सारी मतलब सक्सेस स्टोरी उसमें जिसमें आपको बताना चाहती हूँ जो अभी इसी दिवाली के मौके की है। एक महिला जो बर्तन झाड़ू पोछा का काम करती है और पूरे भगवान भरोसे से उसकी जिंदगी चलती रहती है। लेकिन जैसे अपने ट्रेनिंग में आई हो तो उसने जो है अभी ट्रेनिंग लिया फिर उसने वहाँ से जो कुछ गिफ्ट आर्टिकल के प्रोडक्ट बनाए और 15 दिन में उसने 8 से 10 हजार की कमाई की है। और वो खुद आकर बोल रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये काम करने से अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं कुछ इस तरह से जिससे सम्मान मिले समाज में वो कोई और आके बोले अरे वाह बहुत अच्छे किया आपने तो
इस तरह से वो लाइफ स्टाइल भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछड़ी जातियों में से मतलब जिनको डाको क्लासेस थे, आज तक करीब 600 से ऊपर महिलाओं का नेटवर्क उन्होंने स्थापित किया है। आज की डेट में देखा जाए तो 40 से ज्यादा महिलाएं वॉलंटियर, जहाँ पर पुरुष वर्ग भी वॉलंटियरिंग करने से मतलब बहुत समय में देखा था। यहाँ पर अपनी महिलाएं इनसे अभी रियलाइज हुआ है कि नहीं, ये मेरे समाज की, मेरे समुदाय की मतलब काम है, मुझे करना चाहिए। तो खुद आगे आकर अपने यहाँ से प्रेरित होकर वो आगे आ रही है और 40 से ज्यादा महिलाओं का जो वॉलंटियर का नेटवर्क हम यहाँ पर करता है। शांति के ऑफिस में जो है 8 से 10 घंटे जो ऑफिस आवर्स रहते हैं, इस तरह से हम काम करते हैं और बहुत ही कम मतलब नॉमिनल मानधन पर ये सब काम कर रहा है। हमारे 8 से 9 महिलाएं अभी हम एक साथ काम कर रहे हैं और इन सब का जो है मतलब हम अगर देखें तो महिलाएं कोई चौक में खड़ी होकर तो प्लानिंग नहीं कर सकते, सब कुछ प्लान है। आगे की एक्टिविटी बहुत प्लान की हुई हमने। तो हमारे आज की डेट में देखा जाए तो ऑफिस का किराया, अपना जो टीम का सपोर्ट है, इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टेशनरी, सबको मिला के कुल मिलाकर देखा जाए तो 45 से लेकर 56,000 तक पर मंथ का खर्चा आता है। हम जो मॉडल विकसित कर रहे हैं उसको केवल पुनः के तौर पर नहीं देख रहे हैं। अगर इस तरह से हम यहाँ पर मतलब ये टेस्ट के तौर पे भी आप हम सब ले सकते हैं इसको कि अगर यहाँ पर ये सक्सेस रहा और अभी तक जो रिजल्ट है पिछले 2-2.5 सालों में, इससे लग रहा है कि नहीं ये सक्सेस हो सकता है, तो उस मॉडल को हम पूरे देश भर में हर एक जिलों में मतलब कर सकते हैं। वहाँ पर जो टीम रहेगी कोई भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। इस तरह से वो है जैसे मैंने कहा कि जो हम कम्युनिटी लेवल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, तो रिस्पेक्टफुल लाइफ की बात करते हैं, सम्मानजनक जीवन की, तो उसको लेकर तो हम जो आज की डेट में जो काम कर रहे हैं उसमें से एक क्रांति ज्योति स्टडी एंड ट्रेनिंग सेंटर, जिसके तहत हम अलग अलग स्कूलों में जो है तो करियर गाइडेंस को लेकर प्रोग्राम ये करते हैं। जहाँ तक कि अपने यहाँ पर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो महिलाएं तैयार हो रही है, तो जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी करके अपने अपने बस्ती में बच्चों के स्टडी क्लासेस लेते हैं, जो कि रहते हैं, जिनके माँ बाप दोनों काम करने वाले हैं, मतलब काम इन द सेंस रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जो रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, डेली वेजेस पर काम करने वाले ऐसे लोग, तो उनके बच्चों के लिए ना तो ट्यूशन दे पाते बाहर और ना ही हम जानते हैं कि ऐसे लोग कैसे किस तरह से स्कूलों में पढ़ते हैं। तो उन स्कूलों पर हम ना जाते हुए बच्चों को होमवर्क वो अपनी महिलाएं देती है यहाँ से, जिसका रिजल्ट ये है कि फेल होने वाली बच्चियां भी आज 70% के आसपास, और उनमें आगे कुछ बनना है, इस तरह से उम्मीद जाग रही है, वो कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उनको लगता है कि अपनी माँ की, अपनी दादी की या फिर अपनी नानी की जिस तरह की जिंदगी गई है वो हमारी नहीं जाएगी, इसके लिए खुद आगे आ रही है। तो ये बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट रहा है। रमाई वोकेशनल ट्रेनिंग का जैसे मैंने कहा है कि उसके तहत काम कर रहा है। इन सब के साथ हम जो महिलाओं ने बनाए हुए प्रोडक्ट को एक बेचने के लिए प्लेटफॉर्म मिले। जो महिलाएं अपने यहाँ से ट्रेनिंग लेती है, हाँ, तो उन प्रोजेक्ट को हम जो है महिलाओं के अलग अलग प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर हमने ब्लू बर्ड नाम से प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। शॉप है ये, और उसका मतलब रिसेंटली जो है तो हयाती इंटरनेशनल की तरफ से हमें मतलब उनकी यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस मिला। उन्होंने कहा कि उनके हमारे जो प्रोडक्ट है वहाँ पर भी रख सकते हैं, तो उसके लिए महिलाओं में उम्मीद जग रही है कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, जिससे हमें मौका मिले अपने बच्चों को कुछ आगे की जिंदगी बेहतर बनाने का। इसके अलावा क्रांति की स्कॉलरशिप और फेलोशिप को हमने यहाँ पर शुरू किया। क्रांति की स्कॉलरशिप 10 मार्च को दी जाती है, जो कि सारी दिनों के लिए का स्मृति दिन है। ये स्कॉलरशिप जो है चैरिटी बेस्ड नहीं है,
इसको मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, सारी चीज़ें नहीं है। जो 7वीं से लेकर 7वीं 8वीं 9वीं की जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, इनके लिए स्कॉलरशिप है। जैसे हम देखते हैं कि ये मानसिक और शारीरिक बदलाव का समय है, तो ऐसे वक्त जो बच्चियां रहती है तो वो सब दैववाद या फिर जो है भगवान के भरोसे पर अपनी जिंदगी बिताना शुरू करती, क्योंकि एटमोस्फेयर चेंज होते रहता है। घर वालों को लगता है कि नहीं, ये फिजिकली चेंज हुई, ये मेंटली चेंज हो रही है, तो इसको शादी की उम्र उस तरह से देखा जाता है आज भी। तो जो है उसमें स्कॉलरशिप में हम जो मतलब महाराष्ट्र से अपने एक राइटर है प्राध्यापक गौतम निकम, इन्होंने एक किताब लिखी है तेजस्विनी नाम से, जो कि मराठी में है, और 12 महानायिकाओं का चरित्र उसमें आया है, जिसमें से सावित्री माई है, अहिल्याबाई होलकर है, या फिर झलकारी मतलब रानी है, रानी इसमें, ये सब रानी जीजाबाई है, इन सब के चरित्र उसमें आते हैं। तो लड़कियां जो 7वीं से 9वीं तक की लड़कियां है, ये पढ़ रही है और उनको लगता है कि हाँ रही है, तो मतलब हमारी जैसी सामान्य लड़कियां थी जो आगे जाकर जिन्होंने इतिहास बदल डाला, जिन्होंने समाज के हर एक चैलेंज को स्वीकार किया और अपना जो अस्तित्व है वो बनाया, या फिर हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो खुद में उनमें वो एक बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट रहा कि पिछले 10 से अभी जो आने वाला 2014 रहेगा, ये तीसरा साल रहेगा। और पुणे से पिछले साल जो है तो 25 अलग अलग 24 से 25 अलग अलग स्कूलों से लड़के इसमें इन्वॉल्व हुई थी, और इनका रिजल्ट बाद में देखा जाए तो वो भी खुद अभी उसमें से एक बच्ची है, छोटी है, जिसको लग रहा है कि उसने परसों आई ऑफिसर, उसने बताया कि मैं मुस्लिम गर्ल, और उसने बताया कि मैं मराठी में आई जीजाबाई स्पीकिंग, इस तरह से जो मी जिजाऊ बोलते, इस तरह से उन्होंने लिखा है, खुद तैयार किया और वो प्ले करने की कोशिश करी अलग अलग जगह पर जाकर खुद होके। तो मुझे लगता है कि इस तरह से रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। ये जो काम है क्रांति ज्योति का, इसको मैं मतलब यहाँ पर कम समय में रखने की कोशिश करी। इसमें जो है तो आप लोग जो विदेश में बसे हैं, मतलब भारत में परिवर्तन का कार्य में आपका जो योगदान है, तो मैं एक रिक्वेस्ट के तौर पर आपको मतलब रखना चाहती हूँ कि अगर आपको मतलब से इस तरह से मॉडल स्थापित करना, और मतलब लग रहा है कि इस तरह से रिजल्ट आने के बाद सही में परिवर्तन हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, मतलब हर कोई अपनी लेवल पर काम कर रहा है, लेकिन महिलाओं पर मैं महिला होने के नाते मैं कुछ चीजें मतलब खुद अनुभव कर रही हूँ और बताना चाहती हूँ कि महिलाएं क्यों नहीं आगे आ रही है। अगर बाबा साहब ने कहा है कि महिलाएं आगे आएंगी तो ही देश की तरफ से होगी, फिर भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या जो इस तरह से कामों में मतलब मतलब कर रही, बहुत सारी महिलाएं कर रही, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि नहीं कर रही, लेकिन कम है। अगर महिला ज्यादा आएंगी आगे तो और ज्यादा काम होगा, लेकिन वो नहीं आने की वजह भी कुछ और होती थी। सबसे पहले तो ये लेजिटिमेट महिलाएं जो उनकी घर की समस्या में आज भी जुड़ी है। बहुत सारी फैमिलीज को लगता है कि नहीं भाई मैं बहुत कमा रहा हूँ तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टैलेंट को यूज, अपने स्किल्स को यूज करना सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए भी हम इसको कर सकते हैं। तो उस तरह से अगर हम देख रहे हैं तो महिलाएं कम है, तो ऐसे मामले में मैं मतलब रिक्वेस्ट करूंगी महिलाओं के प्रोजेक्ट की तरफ से, क्रांति की तरफ से आप सबको कि आप हमें इस तरह से एक स्थायी मतलब जो रिसोर्स है आपकी तरफ से, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, इसी अलग अलग तरह से आपका सपोर्ट, हमें सहयोग आपका मिलता रहे, ताकि हम जो काम कर रहे हैं, भले ही ये ट्रस्ट लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो है अभी भी मतलब इसमें कुछ सवाल रहेंगे, मैं आपको इसकी जवाब दे दूंगी आगे। तो इसको रखने की मतलब बहुत सारे काम आगे अभी करने हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ये मॉडल के तौर पर देखते हैं, और पुणे में सेफ है। मैं पुणे से नहीं हूँ, मतलब अमरावती से आई हूँ, पुणे में यहाँ पर चल रहा है, और लेकिन प्लान एक्टिविटी होने की वजह से, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो क्लियर होने की वजह से यहाँ पर रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम जो है तो हम बहुत
कम समय में 2000 में मैं यहाँ पर आई, जो कि पूरा नया एरिया था। फिर भी आज की डेट में मैंने कहा कि 600 से ज़्यादा महिलाओं का नेटवर्क है। और रिजल्ट है कि महिला खुद होकर अभी नहीं, हमें भी इस तरह से रेस्पेक्ट लाइफ चाहिए कि वो खुद आगे आ रही है। तो इसमें अगर आपका सहयोग रहेगा, ये उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात रखती है। अगर कोई सवाल है तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मैंने आपका ज़्यादा समय लिया है तो मैं आपको सॉरी कहती है। और आपने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। Thank you, Archana ji. Thank you very much. It was a very inspirational talk from your side. और आपकी एक्टिविटी भी काफी अच्छे चल रही है इंडिया में। बहुत अच्छा लगा हमको। आप अपना समय आज ऑनलाइन बुद्ध विहार को दिए थोड़ा सा। और हम कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर। गाइस गो हेड, कुछ क्वेश्चन अर्चना जी से। अर्चना जी, इस ऑनलाइन कॉल पे सभी देश के लोग हैं अभी। कुछ जापान से ज्वाइन हुए हैं, कुछ यूएई से, कुछ यूके से और ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लोग रहे थे, कनाडा से। तो सभी कंट्री के लोग हैं और हम एक साथ ही काम करते हैं। आना AIM, आपने जब AIM के बारे में बात कहा है, वो हम लोग सब एक साथ ही काम करते हैं। और कुछ क्वेश्चन है। विनया जी, गो हेड। Hi guys, sorry, I was into something else, but joined very late. I'm very glad that Archana could make to this call today on online Vihara. And Archana, we have been talking offline. I'm very glad that you came. Although I missed your talk, I'm sure I know the gist of your talk, and I'm very supportive. Definitely, we all from US are very supportive of the activities that you are doing, and we will continue our dialogue and see how we can collaborate and work in the future. Thank you. Sure. अर्चना जी, आज को इंसिडेंट ये है कि प्रदीप बंसोड़े जी भी ऑनलाइन है और उनकी वाइफ का भी नाम अर्चना जी है। तो मैं उनसे काफी जब बात कर रहा था, मुझे वो लग रहे थे अर्चना जी। बट वन ऑफ माय फ्रेंड इज आल्सो इन जापान, हिज नेम इज आल्सो प्रदीप बंसोड़े। So I was confused there, but anyway, guys, any question? Gaikwad ji, go ahead. Yeah, Archana ji, you are definitely doing a very job. आप इसके किस प्रकार के बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं लेडीज की, वुमन एंटरप्रेन्योर में किस प्रकार के अभी प्रोजेक्ट आप अंडरटेक कर रहे हैं या लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं? आज मतलब कैंडल मेकिंग है और हमने रमाई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया। उस वक्त हमें जो सिलाई मशीन का था, तो अलग अलग सिलाई से कपड़े की बैग को हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। बहुत ही फैंसी पर्स है वो, अलग अलग डिज़ाइन में, तो उसको फोकस कर रहे हैं। गिफ्ट आर्टिकल में टेरीज है, सॉफ्ट साइज जो है वो है, और माइक्रोवेव जो अलग अलग तरह के झूले हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसमें है। और उसका हम ट्रेनिंग अपने यहाँ से देते हैं। और जो है उस ट्रेनिंग के बाद उन्होंने बनाए हुए प्रोडक्ट को बिजनेस ग्रुप बना के हम कोशिश करें कि ग्रुप है, महिला अकेली करती है, 4-5 महिला इकट्ठा है और वो एज अ ग्रुप वो काम करे, तो इसको हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये इसके अलावा पिकल सॉल्ट स्पाइसेस भी है जिसको हम बनाते हैं, फिनाइल है, और ये मतलब क्या बोलते हैं, कैंडल्स की बहुत सारी डिजाइन से अपने यहाँ से क्रिएट की जाती है। मतलब हम अभी उसका ट्रेनिंग दिया, लेकिन उसमें अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। इसको ग्रुप करने की कोशिश करें,
लेकिन डैश में हमें रिजल्ट आया है और गिफ्ट आर्टिकल जो अलग अलग इसमें रिजल्ट अच्छा आया है। हेलो, आप ये सब प्रोजेक्ट फाइनेंस कैसे करते हैं? जी ये प्रोजेक्ट के लिए आप फाइनेंस कुछ अरेंज करते हैं गवर्नमेंट स्कीम से या कोई बैंक से? जी नहीं, मैंने मतलब शुरू से देखा जाए तो बहुत सारी डिफिकल्टीज के साथ ये शुरू है और आज भी जो है तो गवर्नमेंट फाइनेंस तो नहीं है, अभी भी नहीं है। और उसमें तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 3 साल पुराना चाहिए होता है और हमारे जो ट्रस्ट है वो 2 साल हुए हैं केवल। तो गवर्नमेंट की तरफ से वैसे तो अभी फिलहाल तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन कुछ जो है इंडिविजुअल सपोर्टर उनकी वजह से ये सब कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि रमाई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करते वक्त मैंने अपील की थी, तो यंग वुमेन के लोग यहाँ पर उनकी तरफ से मिस्टर सूर्यकांत किर्लोस्कर से मेरी बात हुई और उन्होंने और या चेतन धेरे सर इन लोगों से बात हुई। लेकिन शुरू में देखा जाए तो क्रांति की जो स्टार्टिंग है तो उस वक्त हम बात रख रहे थे, तो मुझे मैंने जैसे कहा कि फैमिली सपोर्ट मेरे पति प्रतिबंध है और आशीष जी ने शायद आप जानते होंगे, तो आशीष जी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसमें आप ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और जो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी स्कीम है इसके बारे में आप लोग कुछ कर नहीं रहे क्या? कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं टेकअप कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा उसके 3 साल उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है और उसके अलावा जो है तो नेटवर्क बहुत सारी चीजें उसमें है। उसके अगर कोशिश भी करूंगी तो शायद मुझे नहीं लगता कि तुरंत इसमें कुछ रिजल्ट आएगा। नहीं, इसमें 3 साल की कोई जरूरत नहीं होती है। जो 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 स्कीम बताई, एक प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, उसके अंदर भी आप कर सकते हो, कोई 3 साल का जरूरी नहीं हो। और जो गवर्नमेंट गारंटी स्कीम है उसमें आपको 1 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है बिना एनी कोलैटरल सिक्योरिटी के। और ये जो स्कीम्स दोनों है ये है आपके जैसे ग्रुप की, जैसे कि जो नए लोग आ रहे हैं और उनको कुछ करना है, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आई एम अवेलेबल। मैं इसी फील्ड में काम करता हूँ, कभी आपको हेल्प चाहिए तो मुझे बता। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करूंगी। Any other question? Guys, go ahead. अर्चना जी, आप सिर्फ पुणे एरिया और कोल्हापुर एरिया इस एरिया में ही काम कर रहे हैं और इज देयर एनी पर्टिकुलर एरिया आर यू? नहीं, पुणे में ही काम कर रहा है। मैंने कहा कि केवल एक मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है इसको, इसलिए मैं पुणे से बाहर ना तो मतलब खुद जाना चाहती हूँ फिलहाल, और ना ही इससे रिसोर्सेस है कि मतलब मैं कहीं जा पाऊँ। यहाँ पर पुणे में जो काम कर रहा है अभी 8 लोगों की टीम है, उनको मैं किस तरह से मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूशन लोगों से सपोर्ट ले लेके चला रही हूँ, तो वो भी बहुत दिक्कत है कि बाहर कहीं बुलाते। जैसे रायगढ़ में मेरा पहले काम चल रहा था, मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ी थी, आदिवासी कार्यकर्ताओं के साथ मतलब प्लानिंग कर रहा था। अभी वो लोग बुलाते हैं लेकिन मैं नहीं जा पाती क्योंकि यहाँ का भी काम बहुत ज़्यादा है। वो चाहते कि यहाँ पर जो रिजल्ट आए वो और एरिया में आए, लेकिन मैं खुद वहाँ पर नहीं जा सकती। तो लेकिन ये जो मॉडल है, तो मैंने कहा कि ये भारत के किसी भी कोने में अगर इस तरह से काम किया जाए तो रिजल्ट देने वाला है। तो ये कहीं भी रिपीटेड हो सकता है, तो अगर कोई और चाहे तो क्रांति के काम को वहाँ पर शुरू कर सकता है। थैंक यू। Friends, any questions to Archana ji? We also have Pradeep maybe in the side because Archana ji is looking in the side all the time. Pradeep, are you there also? Archana ji, Pradeep ji भी है वहाँ पे? आप भी आइए, अच्छा रहेगा क्योंकि I am talking with the Pradeep long back and he helped us to set up the call today. Thank you Pradeep ji.
your support to Archana ji is appreciated again there. So thank you for coming also today. Any other questions to Archana ji before we move to the next topic? Hello. Go ahead, Lalit ji, go ahead. Yeah, I want to congratulate great work they are doing. So I think we must support their cause in whatever way possible. And also, I think what Archana ji has said that can be replicated at other places. So that can, if I think they can, if they can get some more support resource-wise, I think they can promote their work at other places. Maybe they can also approach like ActionAid or Ford or like Care Foundation, I think, who are engaged in similar work, and they look forward for similar initiatives, especially started by women. And I think even there is a suicide office, I think Pradeep may be aware, so they may be able to support. Maybe begin with small project. But again, congratulations and keep doing great work. Thank you. थैंक यू। हमने मतलब इन सबको लिखा है, रिजल्ट मतलब अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो कोशिश कर रही है। Good. Looks like we do not have question, Archana ji, but we will be in touch offline. हमारे तरफ से महिला एम्पावरमेंट ग्रुप ऑल्सो से कनेक्ट है। विनया जी, स्मिता जी भी वो कनेक्टेड है आपसे। विनया जी से बात हुई थी और शिल्पा भगत यहाँ पर आके गए नोटिस के बीच में, तो अगर आप मतलब वो वहाँ पर आने के बाद आपसे बात रखेंगी। ओके, या वी आल्सो नो शिल्पा भगत, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे बाद में, और वो भी कनेक्टेड है, तो साथ साथ ही काम करेंगे। अर्चना जी, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, प्लीज डोंट हेजिटेट टू टॉक विद अस, क्योंकि सभी लोग बाबा साहब के लिए काम कर रहे हैं और एक ही काम चल रहा है, डेवलपमेंट टू आवर सोसाइटी। So it does not matter which level you do or do, we are doing the same work, and we'll try to connect each other so that we can do the big level basically. So we'll be in touch offline. Pradeep ji, आपको कुछ क्वेश्चन है? There is one more Pradeep Bansode ji on the call. अर्चना बात कर रही है, अर्चना बंसोड़े। हाँ बोलिए। हेलो, मुझे अर्चना जी से बात करनी थी। जी बोलिए। हॅलो, मी मराठीत बोलू? चालेल। हॅलो, मी फेसबुकवर आधी बोललेली आहे तुमच्याशी, आणि खरंच मला प्राऊड फील होतं तुमच्याबद्दल ऐकल्यानंतर, आणि तुमचं सगळं वाचत असते मी, फक्त मला वेळ देता येत नाही फेसबुकसाठी। पण मला तुमचं सगळं जे काही तुम्ही लिहिता किंवा टाकता फेसबुकवर ते मला आवडतं, भरपूर आवडतं, आणि मी मध्ये मध्ये बघत असते, आणि मला वाटतं असं की कधी असं वाटतं की तुम्हाला जॉईन करावं, तुम्हाला हेल्प करावी, तर तुम्हाला जर कधी वाटलं की तुम्हाला हेल्प हवी आहे फायनान्शियल किंवा अदर कुठली, तर प्लीज मला कॉल करा आणि सांगा, तुम्ही काही तुम्ही सांगू शकता। नक्कीच, उलट तुम्ही स्वतःहून म्हणजे मदत मागण्याची तुम्ही जर स्वतःहून आलात ना तर खूप चांगलं होईल, कारण काय आहे, तुम्ही मगाशीच म्हटलं की महिलांची संख्या खूप कमी आहे आणि हा काम आपल्याला खूप जास्त करायचं आहे, तर तुम्ही पण अर्चनाचे आहात आणि मला खूप आनंद होईल की खूप साऱ्या अर्चनाची यामध्ये जुळतील, मला स्वतःला आनंद होईल। वेबसाईट मी सगळ्यांना सांगू इच्छिते की आपली www.क्रांतिज्योती.org नावाने वेबसाईट आहे, ज्या माध्यमातून इतरांशी कॉन्टॅक्ट राहण्याचा प्रयत्न करते, पण गेल्या आठवड्याभर आणि ती बंद आहे, त्याचं जे पेमेंट आहे ते करू शकलो नाही म्हणून ती बंद आहे, पण इन फ्युचर लवकरच ती सुरू होईल, तर ती पण आहे आपली माहिती मिळणार। हरकत नाही, काय करत असते आपले जे जयंतीचे प्रोग्राम्स होतात बाबासाहेबांचे, जी हॅलो,
तर त्यावेळेस डान्स वगैरे आपले जेव्हा त्यावेळेस मी करत असते डान्सिंग मला येत नसतो त्यावेळेस आपले बाबासाहेबांचे सर्व गाणे वगैरे घेऊन मुलांना घेऊन मी प्रोग्राम्स वगैरे करत असते. तर तुम्हाला तसं काही वाटेल असेल तर तुम्ही सांगू शकता मला. ग्रुप पण आहे माझा, 2 ग्रुप आहेत. त्याचे नाव राजरत्न ग्रुप आणि रत्न ग्रुप असे 2 ग्रुप आहेत. तर आम्ही शोध पण केलेले आहेत 1-2 ठिकाणी. नक्कीच. मुझे मैं हिंदी में बताऊंगी सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. यहाँ पर जो महिलाएं जो बस्ती में अभी तक जो हल्दी कुमकुम जैसे कार्यक्रम कर रही थी या फिर कुछ और प्रोग्राम चल रहा था उनका, तो वो आज पिछले 2 सालों से हम देखते तो वो बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट करते हैं, शिवाजी महाराज की जयंती करते हैं, रमाई की जयंती, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम बस्तियों में हो रहे हैं. और अल्टरनेटिव जो हम बात करते हैं कि अगर महिलाएं इसमें से बाहर निकालना तो कुछ अल्टरनेटिव देना चाहिए. तो मुझे लगता है क्रांति दीदी के माध्यम से हम जो दे रहे हैं बस्तियों में, तो उसकी वजह से उनका जो बाकी काम थे प्रोग्राम जो सत्संग वत्संग में इन्वॉल्व होने वाली महिला है वो आज अलग अलग अपने महापुरुषों के नायिकाओं की जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं. और मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छी बात है. Good, Archana ji. Thank you very much again today. Again, please try to come to this Vihara call. We have many people from all over the place are joining. So, in case if you need anything in the future, we'll try to connect. And one more Archana ji came forward to try to help you out. और उनके मिस्टर का भी नाम प्रदीप जी है और शायद आपको पता होगा होगी, तो वो भी एक अच्छा है. मेरा दोस्त भी है प्रदीप बंसोड़े जापान में, उनसे भी मैं आपको कनेक्ट करूंगा प्रदीप जी को. और ट्राई टू वी विल ट्राई टू वर्क ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड द सेम कॉज. अगेन नाउ लुक्स लाइक वी हैव मेनी क्वेश्चन अर्चना जी, बट अपन कुछ ऑफलाइन लेंगे उसको क्वेश्चन को, क्योंकि वी हैव वन मोर शेड्यूल टॉक ऑन द कॉल टुडे. If you want to stay on the line, we have Dr. Nanda Kishore Chandan ji on the call, and he's having some difficulties to join by his internet, and Lalit tried to help him out, and he's on the call today. So let me introduce Dr. Nanda Kishore Chandan. He is the head of the department, chemistry department at the Siddharth College, Mumbai, which is the first college founded by Dr. Babasaheb Ambedkar in 1948. He is a doctorate from the Oxford University, UK. He has recently co-founded Ambedkar International Fellowship for Backward Class Students. It's called AS, Youth Empowerment Social Foundation. YES, Youth Empowerment Social Foundation. And he is working very ground level activity in Mumbai and other areas, and motivating youth and marginalized communities for higher education and employment. After his PhD, Dr. Nanda Kishore ji is continuously traveling all over Maharashtra in different cities, guiding the students and motivating them for the higher studies. So today, Dr. Nanda Kishore ji, Chandan ji is going to talk about the reaching out our students, SC/ST students across caste, gender, region for higher education and employment. So I am going to hand over to Dr. Nanda Kishore Chandan. Dr. Nanda Kishore, are you there? Yes, sir. Can you hear me, sir? Share your video if you don't mind. Yes, sir. Yeah, so we can see you. And again, thank you very much for joining today. And now I'm actually sorry that I could not make it on time due to some technical problem. Sorry for that. I'm very glad to be with a fantastic group and joining, seeing my views and listening to the others as well. okay. Sorry to ask, again, you, sir? सर आपका डबल आवाज आ रहा है, शायद आपका डबल इको हो रहा है समथिंग, तो बराबर क्लियर नहीं आ रहा. Yeah, my now, voice? yes, now it is clear. Okay, sir. Sorry for, sir. Hello, sir. I'm actually sorry. I'm actually sorry that I could not make it on time, and due to the technical problem, I'm very sorry for that. Actually, I would like to share my some experience with the past that where I belong and how I with this
the S Foundation. In fact, the idea of funding S Foundation, that is just to empower the today's youth, because as I have around rural part of Maharashtra, I found most of the students, those who have education, but due to the unemployment and due to the rumors sort of having educations and having no money, you will not get job, and due to that, they are going away from the education. So far, I have started my work by keeping the youth of today's in mind. That when I had been to the Oxford, I have realized that there are plenty of opportunities for the youngsters, and that who are highly qualified and actually wanted to do something. But when I had been to the India in 2009, and I had been to the different places, and in fact the young minds of the Maharashtra and rural place of the particularly, there I found that most of the students are demotivated, and they don't have the passions to be have a good education. One thing that I must emphasize on, that is the financial aid and the lack of guidance, the proper guidance. And keeping in that in mind, when I completed my doctorate degree from Oxford, I had been to the India first, because I wanted to survive the Dr. Babasaheb Ambedkar's the first institute where he founded, and I joined back in 2007 and 2011, sorry, and started going around the Maharashtra and listening to the young minds of the students who are in an education team and who have been out from that is having a degree. So I deliver a number of lectures, and I found that most students, they are little bit diverted. They don't get proper knowledge, don't get a proper motivations, and that motivations they require, because all students, those who belong to SC, ST and other backward communities, they are lacking behind ways. One is the financial aid, and another one is the proper guidance and the motivation. So the photo which is pick up them that they should get a proper path. So I have decided. So first I will go around the Maharashtra and different rural places and have a dialogue with them. I found that a number of difficulties, and that difficulties I thought if I would put in one platform, that number of people promise me that I like to support you in a family. But as it Dr. Chandan, one personality can't do that. So if I would, hello, you're getting to me? Hello. Yeah. Go on. Sorry. Yeah. Okay. So I thought. So I thought let me put it on one platform, that if I would have one organization, so people promise I will do this, that for you. In the sake of that, a number of times I sat with the number of like VIP personalities, and they took very from me that, okay, Chandan, is it like a rally or some sort of function, and they took benefit like, okay, Chandan from Oxford University and doing some social work, and he's from our side, like exploited politicians, they wanted to exploit. But I thought it should not be exploited by myself. So let me put in one platform. So that platform would be good for the benefits of the young mind. So I decided to found an organization, and the motto of that organization is just to empower our youth. So accordingly, I have given a name that the youth empowerment, and that youth should have a social responsibility. So they educated, they forget about the society. So let them put together in the education way, that is a qualified person as well as a successful person realizing society. So I have included social aspect as well. So on that basis, in just 6 months back, I have registered one organization in the name of S Foundation, and I started doing some sort of what I say the propaganda, that I'm going to do some sort of activities like
giving some scholarship, and spontaneously one of my colleagues, not colleagues, I must say friend, he is a colleague as well. He put this information in a US website, and spontaneously Mr. Benjamin, he got a strong trust, like a friend for education international USA. He called and asked me this, and then you are doing excellent job. So why don't you go for the scholarship? So he promised me that I will give the 10 scholarship for the students who are literally means that they are young minds and want to do something. And why don't you go for the young minds who are actually little bit like weaker and wanted to for higher education. So start from the root, that is the 10th standard onward. So Mr. Benjamin asked me find out the 10th the scholar who also ST community, and I just advertise the mouth publicity, and some of my friends in the Maharashtra in the different districts, different colleges, and they helped me lots, and they proposed that scholarship advertisement. I found literally too much response. I got in a 2 months time, I literally had more than 200 forms. That to a scholar minds, like up to 98%, 98 point something. So that too from ratio category, that SC ST student. I was so amazed that any mind, I was so talented. But when I gone through the scrutinized implication, I found the economical background, that their income source is so poor. Some of these students, their parents are just labor, just doing labor in the work in the farm. Some of them are just they don't have any sort of financial aid. They are just a worker in some sort of maybe the we can say in all it is called as that monthly they weekly they go to some other person's place and do more such as labor work, and they get a lump sum maybe money for just food and water. But education they won't get a money. So when I scrutinized all the applicants, I was literally shocked. I found most of the students who are scholars and that economic background is completely poor. My wife Venu did lots of efforts to scrutinize this form, and she found she selected the application according to the merits as well as the background of the students who are completely financially means having a poor ground. We have selected 10 students. Actually, is out of 200, more than 100 students, they are quite competent for the scholarship. But due to the limited financial aid with my organization, with the help of Mr. Benjamin, we restricted. सर आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा माइक के पास प्लीज. Okay, चलेगा सर. So then we are scrutinizing the applications according to the merits plus the student's financial background, and we found really excellent students. And definitely, if we means on the basis of my organization, we have support in the further education, they will definitely do a very job. So accordingly, what I have planned that on coming 29th of December, I have put a workshop at where this Akula district is connected with the core district, where the majority of the students have applied for this scholarship. And the program is not just to parent students, but I have put that program in such a fashion that I have called number of speakers from different faculties, like having a different expertise. Like some of them are from corporate department, personality development. Some are from competitive exams department. Then we can say some are from social background. They will give a little bit social touch to the students. So it is a small workshop type of that celebration. Some workshop, that is career guidance workshop I have organized on 29th of December. So where the students will definitely elicit, but the program is purely for the students of that particular area, and number of students approach me that
sir, when is that program and what is the avenues and who is going to come? Because I'm just putting that in one platform, but some of the students came to know that due to the contact of the different people, and they inquiring, sir, we are very pleased to join such a workshop. But it's a multidisciplinary that the students not only get that financial aid, but some sort of the ask what is required for the getting a successful person. That some of them speakers are like a role models in front of them, that on a such a off situation, like a financially very bad situation, how they succeed in their life. I'm I will be very pleased to share with you that my own example, that I belong to such a poor family where my father used to do a labor job in a farm, and he was able to only get money for his food and butter. But without the any extra money, I would succeed to get the doctorate degree from Oxford. So it is not some magic, but it is due to the grace of Dr. Babasaheb Ambedkar. He has created the hostel facilities, that the social justice and empowerment under the aid, and number of scholarships which I would secured, and I had built the Oxford and returned back to again to India, and the same land and same place where Dr. Babasaheb Ambedkar used to be there in that building. So I'm very pleased that to share with you that presently I'm working with the Siddha College, which is first college which is founded by Dr. Babasaheb Ambedkar, and where Babasaheb Ambedkar used to be there just to guide the students, just to form some sort of conferences for the students. So I'm the person who is trying to do something that what Dr. Babasaheb Ambedkar has done for us. But in the place of the Babasaheb Ambedkar, I got a benefit and I succeeded in my life. But what I do for my students, there are many students like Chandan who are just struggling to get the financial aid and a proper guidance. So my organization's intention is just to support them financially and intellectually, because intellectual, that is the guidance or the proper what is the way to succeed in their life. So if I would give them motivation, inspiration, and career guidance point of view, I think my organization will definitely empower the today's youth who are literally demoralized due to the today's situation. Because if you see the today's fact in rural place, like maybe I must mention the district place like Akola, Amravati, or Aurangabad, number of districts who are having a places to get employment, but most of the employments are like just you have to pay for that, and then you will get a XYZ job. But I wanted to not to both the student that for the paying money and getting the job. I wanted to make the student in such a way that they on their own will do such a better job. The person will come to them that yes, you are competent, you are able to be in our organizations, you are right person for us. So my motto to build my youth in such a fashion that the youth should be recognized by the other organizations for their employment. So my intention is on the S Foundation. I wanted to explore this S Foundation, that I wanted to do them a proper food in the form of the knowledge. Like I wanted to start the libraries in the villages. I want to connect that libraries to my immediately like you people are like Mumbai. There are many people who are intellectual and interested to socially share their views. So in that way, so the villages which are there, they are having no idea what to do in the future, what to do in the part of the successful life in the education. So if I would connect them like through the way of conferencing or sort of library, I think that will be the best source for them. So one thing I wanted to start the library, and maybe the quarterly I'm going to organize the seminars, workshop, and on the that the different persil places, the different villages I'm to cover, and
all the youths belonging to the power, like those who belong to the reserve category. So I wanted to empower them in a such a way that in the future, job is not a motto. On certain age, if they won't get a job, there should be some certain form of technical mind. So on that basis, they would start their career. They would start their life in a successful manner. So I wanted to start some workshop or some sort of training centers where the youth who are having education but not of that standard, they will get a good job, but they would start the employment like technical courses, some sort of we can say the workshops with the short courses will be covered for them to give them the what will be the short course to get the money for their life, who are completely demoralized having education but do not get a job. Another thing I would like to start under the foundation. Most of the after 10th pass, those who wanted to go for education due to the today's financial or the educational system, completely we can say those who have money they can learn. But if the person don't have money, how come they will learn? They will demoralize. They will stop the education. So for them, I wanted to start hostels in the rural places or in the urban places. That hostels will accommodate them in the form of that they will get they will get the food there, and plus in hostel itself they will get parallelly on certain forms of courses like technical vocational courses. So meanwhile doing educate on the other hand they will get the technical sort of mind. So they will be definitely succeed in their education. If not, definitely we have another branch, the vocational. Those who wanted to go for higher study, definitely due to the grace of Dr. Baba Sahib, there are plenty of scholarship, but most of the students they are not aware about that. So I wanted to put a light on that. These are the scholarship. These are the funding agencies. If you are a scholar, if you are a competent, these are able to give you scholarship funding. That I must tell you that my example that throughout my education I hold my education in the government hostels, and not for that I got number of scholarships, and that too from central government, state government, and I had to be up to Oxford. So this sort of information when I used to share the students who are get amazed, they don't know anything about this sort of thing. So there are the agencies who can fund them, who can take care of them, who can give a proper education to them. So this sort of information, if I would put in front of the today's youth, today's the interested youth in the education, definitely they will get definitely benefit. So in terms of the S Foundation, I'm going to start the another project. That project is purely for the students who are educated, who have done education, but due to their wrong choice of the subject, or we can say having a graduate, but they don't get a job. And literally this literated mind, when they are at the level where those young minds wanted to go for education, but just looking at this unemployed youth who are dangerous, because they are spreading a bad message to the society that okay, look, this guy who has taken like a BA, BCom, MSc, MCom, but could not get a job. What is there? If you go for a MA, MCom or MSc, we don't get a job. So why we go for education then? Stop the education. So this is the bad message goes in the youngsters' mind. So they get demoralized at the just point where they start the education, that is at 12 or 11. So I wanted to root out that things, because these people, that those who are educated were frustrated and demoralized and staying there. So that gives bad reflection to the society. Wanted to engage them in such an activity, they would start their earning on their own. So for them, I wanted to start a micro loan, that like a 50,000 or a lakh. If I would give them a loan, so that there should be a boundary that in 1 or 2 years we could repay it back to the society. But in that period of time,
just go for that and get some sort of settlement or some sort of the employment, some sort of your job or technical point of your workshop. So once they get succeed, so one literate person who is just spreading the bad message in the society will be cut off. So my intention is just to promote the education in the youngsters mind, that is the youth of the society, to who wanted to go for education. The other one, those who have taken the education but spreading the bad message, which is the most dangerous thing for the youngster mind. So I wanted to engage them in such activities. They should start their earning and should get engaged, and not to just roaming in the villages or in the town to just disturb the society or just because once you are literate in a degree but no employment, this is one of the dangerous part of the society, because they simply just sit at one place and spread the rumors, and that rumor kill our society. And my intention in terms of the youth foundation, that I wanted to empower the educated mind as well as the those who are at the platform to search for the education. There are a number of agencies who wanted to collaborate with me, but due to the fear of political interference, I wanted to just cut off, because I don't want to be a political the interference, because I wanted to grow my community, my young minds in such a fashion they should realize the social impact. Since XYZ political party fund my organizations, so they might exploit my expertise or my work for their benefit. So I don't want to interfere in such malpractices. So there are a number of friends with Mr. Benjamin, who is so kind that he has given me an opportunity that he in the beginning of my foundation, like we are just a newborn baby, that in just 6 months span, we have started this organization, and maybe the 2 months back after registration, and so we are just a newborn baby, but we have a deal to take such a big step that with the help of this Center for Education International USA, they sponsor this STEM scholarship, and on the basis of that, I put one workshop from I can say the felicitation to the student and the inauguration of my S foundation. So it's a sort of cocktail for them, and it will be a really good workshop for the young minds of the society, those who are in rural places. I have contacted a number of the colleges, number of schools, that you have to be with your students, that this is a big workshop, and I have advertised it in a fantastic way. It's a purely academic pop. So number of friends, they contacted me, they asked me the place, dates, and they promised me that yes, I'm to come with my all students. They booked the luxury, they wanted to come to my as a center place. And I must mention, there are a number of academics people who are very interested to support my activities. So once I just asked my one of teacher, who is a principal at Sri Shivaji Science Akola. I asked him that sir, I wanted to go for one workshop for the youngsters who wanted to go for higher education, and I want a place to go for this workshop. He promised me, so I will give you all sort of facilities. He just go on, because this is the really a fantastic idea. He gave me the hall, he gave me his facility, all his stock. He is engaged that whatever infrastructure, whatever manpower you require, you don't bother. You just frame the whatever the workshop is there. You ask the speakers. I have contacted the speakers from Pune, from Aurangabad, from Nagpur. One of the speakers, Mr. Lalit, is there. So this is the completely a cocktail of speakers, and all this cocktail they are going to cover the all aspects of the how the young mind will get shaped to get a good education and good social life, good social touch, because just giving them money and just go for education, that is not my the intention. Their intention that with the education they should realize the importance of social aspect, because I being Oxford return, I must mention about myself that I belong to such a small place called Kausa village in Nakula district, where
you can't see the I can say the counter the picture of that this is very small, but due to the help, the aid from my teachers, from guidance from the teacher, financial aid from my teachers, and again I mentioned due to the Dr. Babasaheb Ambedkar, I go for this higher study from my childhood to the Oxford education. But keeping in mind that I am a doctorate from Oxford University, so this fact it's very important that I got a higher education. But there are many more unlike students, they are struggling due to the financial aid proper guidance they can't meet. I must mention that when I did the Oxford, I have been asked number of my students, number of my teacher fellows, my friends, that you are in Oxford now. Now you will get a job in America or like UK or somewhere. So you are not going to back to India. So I laugh on them. Why should not I come back to India? Because India, and that too my place where I was working in that college. I will prefer to come back to the Siddharth college I was before. In front of me there were many opportunities. As being Oxford doctorate, so I had plenty of opportunity. But having a that passion that I must not forget my society, the place where I came. If I would not pay back to my society, I am the cheater. So I asked my friend, sorry friend, I'm not doing any like a like USA or UK. I'm coming back to the India after my doctorate. Very next day, I'm joining back to the China. People some point they laugh on me that why he like that? Because I in front of him number of opportunity. Why did he go for some other like institute like IIT or TFR or some so far well established institute? Why he wanted to go for the like Siddharth college? But I must mention sir here the Siddharth college which founded by Dr. Babasaheb Ambedkar already done. There are certain some power in that institute. The each and every bricks of that institute got a touch that Dr. Babasaheb was there in the vicinity, and that inspiration always motivate me to go for the betterment of our society. There are plenty of work left. I have done tremendous job, definitely, and there are many more work to do. Like there are many more new people or many organizations struggling for our society to get benefit. So I'm just one part or point. I wanted to share my expertise, my knowledge, my whatever I acquire, my the expertise in my subject or whatever the social experience I got. What are the lacunas? What is the hurdle when you are in such an odd situation? How to conquer such situation? How to get how to live a life in like a tiger manner. How Babasaheb had done such a great job. Yes, hello. Nandakishore, Yes, yes. I think the time is coming up. Oh, But yeah, yeah, yeah. Yes. I'm going to conclude. So it is the intention of my foundation, the mind of the society to just empower them, not empower. They should realize the social importance. This is the intention of my organization. Yes, Lalit. Hello. Yeah. Hello. Thank you, Dr. Nandakishore Chandanji. Thank you very much for giving all the information. There is a lot of Yes. questions on your topic. Devendra, please go ahead. Devendra? Hello. No, Yeah, go ahead. question from my side. Oh, no question. Okay. I thought you were typing the chat. Okay. Okay. Any questions to Dr. Nandakishore? Nandakishore, are you original from the Mumbai area or are you? Actually, sir, I'm basically from Akula district, a very small town. Not a town, Okay. a village, a very small village. Okay, there was a question But from outside. Uh,
Nandakishorji, one question I have that there's a lot of students are coming to America, UK, or going Australia, but those students are not coming forward and paying back to the society. So, what is your experience like? You are organizing the so many workshops here and there, but are you also, I mean, making sure the people who are we are educating them are need to come forward and paying society? Actually, those who realize the social importance, they wanted to back, but I must mention, because I had been in a contact with number of students who do not have a social background, like who don't have important society. They just wanted to just live their life in a luxurious way. They actually don't have we can say the importance for life or the society. But as in my case, I have learned such a hurdle to life. So I realized that if I would get a nice job in UK or America, so what I will make to make my career only. But what about my society? That there are plenty of students are just struggling to get a proper education, the primary or the higher secondary or maybe the graduate education. They won't get education. Even they don't get a guidance so far what to do in the education. Even in my case, I must tell you, sir, when I had into the education stream, I was not knowing what is science and what is arts and what is commerce. But today, I make myself able to go for Oxford. But it is just due to the grace of my teachers that they guide me in a proper way. But I thought if I would go back to the society, I must help to the number of students and minds like me, those who were in such a panic situation, who were not aware about the science, commerce, and art. But now I can get to the number of the doctorate student you want. So why don't you go for society to pay back again? So that was my intention, and that too, I belongs to the Dr. Babasaheb Ambedkar first route. When I joined, from that day only, I have decided I am here for a social cause, not for my personal like uh, upliftment. Definitely, the personal life upliftment is there, definitely. But equally, if I would share my expertise, or if I do something for my society, it would be a great job, because it's inspired by Baba Ambedkar, because I am living in there day to day. So that's the motivation, that the today's young mind, they are diverted, they are fluctuated, they don't know the social importance. So that's the issue I realized. Thank you. Jagdishji, go ahead. Oh, no question. Okay, sorry. Any other question? Gaikwadji? No question. No question, okay. Gaikwadji is going to connect you offline later on. He wants to talk to you. Okay. Naliji, go ahead. Okay. Yeah, I think you mentioning about, you asked question about the workshop, Maheshji, in the message. Yeah. Actually, this in Akola, they are planning to organize this big program. Around 500 students are coming there, and majority from scheduled caste community and some from ST and NT community, and OBC. And the aspect of students not helping back once they achieve. So in this workshop, Nandakishore insisted that we should put one session on social responsibility, paying back to community. And the main purpose of the program, long back actually we are talking about we should encourage 10th class students. And I was talking to some people at Vinaya, but we could not work out how we can give fellowship to students. They have in Andhra Pradesh, this Benjamin and others have around fellowship for around 40 students, for 10th class students.
So they select from all over state. They invite essays on Ambedkar and the 10th class mark sheet and their economic situation, their financial background, and based on that they select around 30-40 students and they felicitate. So this year I met this Benjamin sir once. I was there for a conference in San Diego. So I requested please support some similar program in Maharashtra because there are a lot of people and students quite interested. So and he said if somebody is keen to facilitate, then he will support it. And then Nanda Kishore facilitated it, and his wife actually put a lot of efforts in selecting reviewing the applications which they got from all over Maharashtra. And hopefully we can plan out for expanding it to at least 50 maybe next time. So Benjamin was saying that we should collaborate and with different people, and a lot of people from across caste support this cause, raising money from India and in the US. And so I think hopefully this will go on, and every year I suggested Nanda Kishore that every year in different cities of Maharashtra we should have this program, one big program and other small programs, ongoing workshops focusing on 10-12 students. Thank you so much. Thank you, Lalit, for sharing the information. Again, Nanda Kishore with Chandanji, we are trying to connect everyone on this forum and trying to raise the awareness. So if any workshop is coming, any Nagpur or Akola area or Mumbai area, so we will also try to support that cause and try to spread the awareness in our students. Great, sir. Is any other question to Dr. Nanda Kishoreji? Sunilji, from your side, any question? No, Maheshji, I'm fine, thank you. Okay. Okay. R.S. Pankajji, any question from your side? No. No, but again, thank you very much again guys joined today. Special thanks to our speaker today, Archana Vaidyaji, and also Bansode sir, and also Dr. Nanda Kishore. Please try to connect in the future also on the online. We have. Sure, sir. It's my pleasure. It's my pleasure to be with you. Thank you. Not a problem, and we will try to connect you offline also, and also please join to this forum. Actually, this is a good everyone join every Sunday 8:30. We have a good speaker. Monks coming also every Sunday. This week we couldn't. We couldn't get the monks. But if friends, if anyone knows from your side, we are trying to bring our monks here on the call. At least we can listen the 30 minutes Dhamma talk from him and Buddhist knowledge. And we'll try to connect all the monks, not only from India and also US and other parts of the other countries. We are trying to connect here. So that's a part of this forum, online Buddhist Vihara. Again, thank you Archanaji for joining today. Thank you Nanda Kishoreji joining today. And we will talk offline. We have very short time. We only allow 1.5 hours, but we always go more time because of the speakers and other things. But again, thank you very much for joining. And Thank you very much indeed, sir. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. And good night, everyone. And Good night, the sir. people in Japan and other parts, good night and have a good day. Thank you very much. Thank you. See you next time again. Bye. Thank you. Bye.